हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये है इस सीरीज़ का पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लेना। तो गाइस, थर्ड पार्ट में हमने क्लॉथ को थोड़ा बहुत सेट किया था। आज हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी। तो गाइस, मैं अब वाइट जेल पेन यूज़ करके उनके कोट के ऊपर जो चेक्स हैं उनको क्रिएट कर रहा हूँ। आपके पास अगर वाइट जेल पेन नहीं है तो आपको ग्लास मार्किंग पेंसिल या फिर टम्बो मोनो 0 इरेजर यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, जब मैं यहाँ पर बेस लेयर दे रहा हूँ 2H पेंसिल से, आप HB भी यूज कर सकते हो। बस आपको पेंसिल्स को पीछे से अच्छे से होल्ड करके रखना है और धीरे धीरे से अच्छे से अपडेट करके पेंसिल्स को चलानी है। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. As you fade away.
तो जब मैं फिर से 2H पेंसिल से यहाँ पर बेस लेयर दे रहा हूँ। अब मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज करके डार्क पार्ट को ऑफ कर रहा हूँ। इसमें मैंने पेंटेल की 4 ब्लेड डाला है। आपके पास अगर पेंटेल की 4 ब्लेड नहीं है तो आप नॉर्मल जो 4B आता है आउटलाइन का या फिर और किसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आपने अगर पहले से HB पेंसिल को यूज़ किया है तो उसके ऊपर आपको फिर से एक लेयर देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर वाइट जेल पेन नहीं है तो आप टॉम्बो मोनो 0 इरेजर या फिर और कोई हाइलाइटिंग टूल भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अब हमारा ड्राइंग हो गया है कंप्लीट। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं सोच रहा हूँ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के ऊपर एक सीरीज बनाने के लिए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना मैं रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के ऊपर एक सीरीज बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग, बाय।